So yeah, previous वाली class के अंदर we started with the working of electric potential. I made you do the formula. So अब जो remaining काम है ना उसको अभी start करा दूँ. All right यार. So just a quick recap. फिर आगे की continuation कर लूँ. So in the last class, एक सेकेंड ना मैं मार्कस की स्टाइलिस को जरा चेंज कर लूँ. All right. So in the last class, beta, we did the formula for electric potential. This was the result. Okay, and we also suggested that with regards to the working for electric potential, it is important that the sign of the source charge must always be taken into account. Okay, so if the source charge is positive, we will write down the positive sign as you would see in the calculation, जो हमने last time करी थी. मैं highlight कर रहा हूँ. And likewise, if the source charge is negative, we positioned a negative sign in the calculation as well. So स्क्रीन पे आपके पहले आ जाए फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं. सही है. So while doing the calculation of electric field strength, the signs were ignored. But while doing the calculation for electric potential, the sign was taken into consideration. And that was the point where we stopped in the last class. अब यार ये डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव साइन क्या सिग्निफाई करेगी और माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगी. ठीक है. So this is the point where we stopped in the last class. यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ. ठीक है. All right. So before I move on to the next slide, पहले ये वाली कंक्लूड करा दूं. So इसको शिफ्ट कर दूं. पूरी वर्डिंग्स वन को मैं देख लूं. इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं. See, so as far as the definition is concerned, I'll just read it through. आप मेरे साथ साथ फॉलो कर लो. ठीक है. So we define electric potential kind of in the same way as we used to define gravitational potential, roughly along the same lines. So if you remember the definition of phi, which was gravitational potential, electric potential kind of has a similar definition. So amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to any point within the electric field. Kind of a similar definition to what we had seen earlier on while we were doing gravitation. Okay, so amount of work done in moving a unit charge, in this case, a unit positive charge from infinity to any point within the electric field. Now, you could have written moving a unit charge, but the fact that charges are of two types, positive and negative. So usually positive is used as a standard for all kinds of definitions. Hence, the term positive charge kind of makes more sense. Now, extending this idea further, remember we had studied previously the reason as to why values of gravitation potential phi are always negative. And the reason that we gave was work is always done by the field. And this work done by the field results in a loss of energy. इसीलिए negative sign आता था. So the reason as to why gravitational potential phi are always considered to be negative, उसका reason हमने ये दिया था that work is always done by the field in moving the mass towards the source mass. Now, in this case, we have realized from the above calculations, we have established that electric potential V can either be positive or it can be negative because the sign of the charge is always considered. So in the exams, if they ever ask you, positive answer क्या signify करेगा? So a positive answer implies that work is done against the electric field in moving a unit positive charge from infinity to any point. Whereas a negative answer will imply that work is done by the field itself in moving a unit positive charge from infinity to any point. So do recognize the fact that in the exams, if they ever ask you कि electric potential का positive answer क्या signify करता है,
versus negative answer क्या signify करता है. So based on the wordings, a positive answer implies that work is done against the electric field in moving a unit positive charge from infinity to any point. Whereas a negative answer for electric potential implies that work is done by the field itself in moving a unit positive charge from infinity to any point. So two things to be taken into account. Firstly, while using the formula, the sign must be taken into consideration. So if the source charge is positive, we'll write a plus sign. If the source charge is negative, we will write down a negative sign. This indicates that the answer for electric potential can either come out to be a positive result or it can work out to be a negative result. The positive result क्या signify करता है? So a positive value for electric potential implies that work must be done against the electric field while moving a unit charge from infinity to any point. Whereas a negative answer implies that work is going to be done by the field itself in moving a unit positive charge from infinity to any point. सही? So formula हो गया. फॉर्मूले के अंदर साइन ऑफ द सोर्स चार्ज मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये बात भी हो गई. और अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो वो क्या सिग्निफाई करेगा, और अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो वो क्या सिग्निफाई करेगा, उसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग हमने कंक्लूड कर ली है. अब मैं स्लाइड को शिफ्ट कर रहा हूं. सो अब कैलकुलेशंस कैसे करनी है आज उसकी डिस्कशन कर लेते. तो बिफोर आई मूव ऑन टू द कैलकुलेशन, पहले थोड़ा सा सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं. एक सेकंड दीजिएगा. ठीक है, so as I said, let's just quickly go through similarities as well as differences between gravitational potential and electric potential. So phi और v में similarities क्या क्या है और differences क्या क्या है, मैं explain करता जा रहा हूँ. यार ये वाला क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में काफी कॉमनली आता है. So I guess ये तो kind of learn करने वाली चीजें हैं. So let me just quickly go through the similarities and differences. First similarity, both have a value of 0 at infinity. But if you look at the formula, तो phi का formula was minus gm upon r और v का formula was q upon 4 pi e naught r. So in both cases you would realize, दोनों cases में you would realize, as r will approach infinity, the value of phi also approaches 0 and the value of v also approaches 0. Hence the first similarity. Both will have a 0, both will have a value of 0, I'm sorry, at infinity based on the formula. अच्छा, formula तो मिटा रहा हूँ because ये previously किया हुआ था. So I'll just need some space, so I don't think you need the formulas. Second similarity. Both involve concept of work done. इसको भी check कर लेते हैं. Remember the units of phi were joules per kilogram. And the units of gravitational potential के साथ electric potential के units were, ये हमने last time किया था, joules per coulomb. So I think अगर आप दोनों के units में comparison देखोगे, so joules का term दोनों में आ रहा है. And that implies both involve concept of work done. So both have a value of 0 at infinity and they both involve concept of work done. Differences देख लेते हैं. जो relevant नहीं है ना वो चीजें erase कर रहा हूँ. ठीक है. Differences के अंदर one involves mass while the other involves charge. Second difference, phi is always attractive, whereas v can be both attractive as well as repulsive. Okay? And then the third difference, in phi, work is always done by the field, whereas in v, work can be done either by the electric field or against the electric field. So differences के अंदर, one involves mass, the other one involves charge. Secondly, phi is only of an attractive nature. V can be both attractive as well as repulsive. Third wala,
In phi, work is always done by the field, whereas in V, work can be done either by the field or against the field. Moving on. नेक्स्ट वर्किंग थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट वाली वर्किंग पूरी आ जाए. मैं कैलकुलेशंस को दोबारा कर लूंगा. So for the time being, I'll leave the final answers. I'll just erase the calculations. Okay. So the next working is how to calculate electric potential V due to multiple charges. अच्छा, ये कैलकुलेशन काफी सिंपल है और मैंने इस कैलकुलेशन को एड्रेस करने के लिए स्टेप्स लिख दिए हैं. तो आप पहले मेरे साथ साथ स्टेप्स को रीड कर लो एंड देन आई अप्लाई दिस ऑन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन. So how can we calculate electric potential V due to multiple charges? So to calculate the resultant electric potential, पहला वाला step, calculate electric potential V due to one charge at a time using the formula V is equal to Q upon 4 pi E naught R, taking the sign into account. तो पहला step बहुत simple है. To calculate resultant electric potential, start by calculating the electric potential due to one charge at a time. तो अगर 5 charges हो या 10 charges भी हो, so take one charge into account and calculate the electric potential due to that charge using the formula V is equal to Q upon 4 pi E naught R, and remember to take the sign into account. पहला step तो ये हो गया. और फिर second step, finally add all your individual answers to get the result. ठीक है, so the working is kind of simple and you can't really forget that because बस करना ये है कि take one charge at a time, calculate its electric potential, then move on to the second one, then the third one, then the fourth one, then the fifth one, as many as there are. Once we have worked out the individual potentials of all these charges separately, then the second step, simply add them up to get the resultant value. So let me apply this working. मैं highlighted lines को जरा quickly erase कर दूं. Steps याद रख लेना, बहुत simple है. So have a look at the diagram. See, there is a charge. Diagram आप खुद देख लो. 12 coulomb of charge, positive 12 coulomb का charge है. At a distance of 8 centimeters away from a point P. And then you have this other charge, minus 6 microcoulombs ka, at a distance of 6 centimeters. See, and the question is saying you are supposed to calculate the electric potential at the point P. So working dekh lena. See, so I'll start by calculating the potential due to A. तो पहले A वाले चार्ज की कैलकुलेशन करता हूँ. ठीक है, A वाले चार्ज का अमाउंट गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है. अप्लाई करता हूँ, अब जरा देख लीजिएगा. So the formula was Q upon 4 pi E naught R. अच्छा, ऑल्दो आयशा है और वो मेरे लिए कैलकुलेट कर भी देगी, लेकिन आई थिंक मेरे पास सिर्फ आंसर्स मैंने मिटाए नहीं है ना, तो फिर आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मैं सिर्फ नंबर्स लगाता हूँ, आपको देख लीजिएगा. तो चार्ज के लिए द फर्स्ट चार्ज इज पॉजिटिव 12 माइक्रोकूलम्स. कन्वर्जन आप लोग फिर बाद में खुद कर लीजिएगा. 4 पाई ई नॉट, इट्स डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर्स, so 0.08. तो कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मैं आंसर को हाईलाइट कर. Likewise, do the same working with the other one. With the other charge and the distance. अप्लाई करता हूँ, आप देख लीजिएगा. So the same formula. I don't know मैंने formula दोबारा क्यों लिखा. There was no need. Sorry. Anyways. So second वाले charge की working देख लेते हैं. Wouldn't we change the 12? Yes, we will, Ibrahim. लेकिन since मुझे बहुत दफा change करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि change आप लोग करेंगे और मैंने change नहीं किया. ठीक है, लेकिन हाँ बिल्कुल change करेंगे. कर ही देता हूँ यार, दे दो एक सेकेंड.
ठीक है, this should be it. ऑलराइट यार, ये आपका एक रिजल्ट आ गया। दूसरे वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं। दी अदर चार्जेस नेगेटिव माइंड यू। मैं किसी जगह अगर मिस आउट कर जाऊं कन्वर्जन तो फिर वो आपको देख लीजिएगा, ट्राई करता हूँ कि हर जगह लिख लूं। एंड द डिस्टेंस इज 6। इसका ये आंसर आ गया। दिस इज योर स्टेप 1 है ना। द स्टेप 1 वाज कि आपको इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है टेकिंग वन चार्ज एट अ टाइम। तो वी ए निकाल लिया, वी बी निकाल लिया, और फाइनली स्टेप 2। सो स्टेप 2 के अंदर add all your individual answers to get the resultant। तो आई थिंक आपका फाइनल आंसर वर्कआउट करके आ जाएगा, आपको नजर भी आ रहा होगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सही। अच्छा, सिमिलरली अब आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। सो इसी की एक्सटेंशन। सो प्रीवियस वाली वर्किंग के अंदर वी कैलकुलेटेड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब आई एम एक्सटेंडिंग दैट आइडिया। सो नाउ द नेक्स्ट वर्किंग इज हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, लेट मी जस्ट डबल हाईलाइट द टर्म, हाउ डू वी कैलकुलेट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले स्टेटमेंट्स देख लो। So change in electric potential is denoted by the symbol of delta V. Second statement, it is also called potential difference. So either you can use the term change in electric potential, alternately delta V, or potential difference. Potential difference being the most common terms that you have already been using right through O levels. Anyways, सारे terms सही हैं. And the formula for calculating the change in electric potential is the same as calculating the change in gravitational potential. If you recall, change in gravitational potential का ये formula था, final value minus the initial value. Likewise, change in electric potential also follows the exact same relationship. अब यार आपकी choice है, use the entire term change in electric potential, otherwise just the term potential difference, or just the term delta V. कैसे करना है वो देख लो, पहले डायग्राम को चेक कर लेना। So how can we apply this formula? Calculate the change in potential from the point Q to the point P. So to calculate the change in electric potential from Q to P, वर्किंग के स्टेप्स देख लीजिएगा। अच्छा, अब देखिएगा, अगर आप डायग्राम्स को फॉलो कर रहे हो, सो मेरा ख्याल है आप डायग्राम्स की बेसिस पे मेरी वर्किंग के स्टेप्स को खुद भी अंडरस्टैंड कर लोगे। मैं एक्सप्लेन साथ साथ करता जा रहा हूँ। अच्छा, एक सेकेंड दीजिएगा, मैं जरा टेक्स्ट वगैरह रिमूव कर। ठीक है, पहला स्टेप, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P। ठीक है, अच्छा डायग्राम से प्लीज चेक कीजिएगा। तो पहले मैं P का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आप डिस्टेंसेस देख लीजिएगा। सॉरी गाइस, एक सेकेंड है, सॉरी यार, वो स्क्रीन मेरे हाथ से शिफ्ट हो गई थी। ऑलराइट, सो स्टेप 1, P का पोटेंशियल कैलकुलेट कर, नंबर्स देखते जाइएगा। तो यू हैव द चार्ज। अब मैंने यार इब्राहिम कन्वर्ट करके नहीं लिखा, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग खुद कर लोगे। मैंने माइक्रो कूलम्स को चेंज नहीं किया है। यू हैव द डिस्टेंस। So this is the potential due to A at the point. Now further आगे, now take the other charge. So charge की वैल्यू, चार्ज का डिस्टेंस। ठीक है, सो पोटेंशियल एट P पहले कैलकुलेट कर लिया। सो पोटेंशियल एट P ड्यू टू A, दैट्स द रेड वन। फिर अगेन पोटेंशियल एट P
ड्यू टू द अदर चार्ज B, ऑल्सो द रेड वन, और फिर इनकी कैलकुलेशन को कंबाइन कर दिया, तो ये मेरा आधा आंसर आ गया. दिस इज द पोटेंशियल एट P. सही. आई एम होपिंग कि आप नंबर्स को फॉलो कर लोगे, डिस्टेंसेस को भी फॉलो कर लोगे. माइक्रोकूलम इज द ओनली थिंग व्हिच आई हैव नॉट कन्वर्टेड बिकॉज फिलहाल जरूरत नहीं है. एरोस बता दो. ओके, अब एग्जैक्टली यही काम दूसरे वाले पॉइंट के लिए करना है. सो अब मैं क्यू की रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ. ठीक है. सो अब मुझे पोटेंशियल एट क्यू कैलकुलेट करना है. उसकी भी वर्किंग देख लेना, डायग्राम से चेक करते जाना. चार्ज इज 12 माइक्रोकूलम्स. Its distance is 10 centimeters. This is the working done with the green marker. And the other charge is minus 6 microcoulombs. And the distance is 4 centimeters. So the green working is giving me the potential at the point Q. उसका भी आंसर आ गया. So basically जो working हमने previous example में करी थी ना, you may very well say that this working kind of appears to be an extension of the previous working. So आपने पहले P का potential calculate कर लिया, that's the red working. फिर आपने Q का potential calculate कर लिया, that's the green working. Okay, I think नवल, हाँ तुमने खुद ही follow कर लिया है. नवल, can I continue? I guess तुमने खुद ही follow कर लिया ना? Because I just made an arrow for that, I guess. ठीक है. So once you have the red answer and the green answer, so रोहेल ने, अगर आप लोग देखोगे तो उसने everyone पे comment करके भेज दिया है कि आगे क्या करना है. From the heading, I guess it's pretty apparent. We are trying to calculate the change in electric potential. है ना? Basically potential difference निकालना है. So he's right. Obtain the difference to get the resultant. ठीक है. सो आई थिंक दोनों का डिफरेंस निकालने का काम मैंने नीचे किया हुआ है. चेक कर लीजिएगा फाइनल माइनस रेशियो. सो वीपी माइनस वीक्यू, और नंबर्स आप टॉप से फॉलो कर लीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. सही. सो बेसिकली कैलकुलेटिंग द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्लैश पोटेंशियल डिफरेंस स्लैश डेल्टा वी, जो भी टर्म आप सूट करे. स्टेप्स याद रखिएगा. कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू वन, एक पॉइंट पे निकालो. इसके बाद दूसरे पॉइंट पे कैलकुलेट करो, और फिर दोनों का डिफरेंस स्टैब्लिश कर लो. सही. अच्छा, जो फाइनल आंसर आ रहा है ना, ये फाइनल आंसर सिंस पॉजिटिव में आ रहा है, इफ आई आस्क यू कि यार ये पॉजिटिव वाला आंसर क्या सिग्निफाई करेगा, सिंस वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव आंसर. हाँ, इब्राहिम का क्वेश्चन जो एवरीवन पे आया हुआ है ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग कोई ना कोई पूछेगा, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, तो फिर मैंने एड्रेस नहीं किया. जरा सब लोग इब्राहिम वाले क्वेश्चन की वर्डिंग को देख लो. ही सेइंग हाउ डू वी नो कि वीपी इज फाइनल और व्हाटएवर. सो फ्रॉम द क्वेश्चन, तो इब्राहिम में हाईलाइट कर रहा हूँ क्वेश्चन को यूजिंग द पिंक हाइलाइटर. देख लो. तो क्वेश्चन से इब्राहिम पता चल जाएगा. गोइंग फ्रॉम क्यू टू पी, सो आई गेस यू वुड एग्री पी विल बिकम फाइनल, क्यू विल बिकम इनिशियल. ठीक है जनाब. ओके, रोहिल ने तुम्हें आंसर भी दे दिया था. रोहिल, वैसे यार अच्छा काम कर रहे हो तुम. बीच में किसी का क्वेश्चन आया करे ना, तो बजाय इसके कि मैं एड्रेस करूं, तुम्हारे नॉर्मली आंसर सही ही होते हैं, मैंने नोटिस किया है. तब तुम मुझे भी भेज रहे होते हो, तो यार वो तुम खुद ही आंसर दे दिया करो. इन केस एरर होगा तो मैं आप लोगों को रोक के बता दिया करूंगा. अदरवाइज इफ यू पुट योर क्वेश्चन फॉरवर्ड, रोहिल के आंसर से काम चलाइएगा. मैं खुद भी रोहिल के आंसर्स को देखता जाऊंगा. ऑलराइट. सो एज आई वाज सेइंग यार, ये पॉजिटिव आंसर क्या इंप्लाई करेगा? व्हाट इज दिस आंसर टेलिंग अस? लुक केयरफुली. इस आंसर से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली? सो दिस आंसर इज टेलिंग यू इज, आप मेरी वर्डिंग को इग्नोर कर दें, एंड लेट मी रीराइट द वर्डिंग.
this positive answer implies that if 1 coulomb of charge is made to move from Q to P in the above diagram, then the work done against the field would be equal to 7.7 times 10 to the power of 5 joules. See, I hope you guys are getting it. Okay, the positive answer implies that if 1 coulomb of charge is made to move from Q to P in the above diagram, then the work done against the field in doing that task or in achieving that task or in fulfilling that task, the work done against the field amounts to 7.7 times 10 to the power of 5 joules. So basically, you will have to spend 0.77 million joules of energy. You'll have to spend 0.77 million joules of energy if you want to move a charge of 1 coulomb from Q to P. Agreed? You will have to spend 0.77 million joules of energy if you intend to move a charge of 1 coulomb from Q to P. So that is how you can kind of interpret the answer that you are getting for delta V, let's say. Okay, further आगे extend करता हूँ उसको. Next वाली slide पे move कर रहा हूँ. So screen पे आपके आ जाए. ठीक है, this is also a similar question. In fact, very similar. The only reason of making you do this question again is because मुझे इस question अब further आगे की theory करानी है. So we have done potential. We have seen how to calculate potential. We have seen the significance of positive and negative signs in the potential. We have seen the similarity and the differences between gravitational potential and electric potential. Then we have seen how to calculate potential difference. तो अब इसको और आगे extend कर. Diagram पहले देख लो. All right. तो यार मैं इसको ज्यादा zoom नहीं कर रहा because I want कि वो पूरी की पूरी working आपको नजर आ जाए. So I leave it इसी size पे रखना हूँ. I think बस इतना काफी है. ठीक है. तो यार there is a charge of plus 12 microcoulombs. इसका distance is 4 centimeters from P and there is a charge of minus 8 microcoulombs. इसके भी distances आपको given है. तो यार इन सारे numbers को use कैसे करेंगे ना, तो आप जरा calculations करने से पहले इन numbers की relevance को देख लें. इसके बाद मैं apply करता हूँ. मैं answers को erase करके दोबारा लिख लूंगा. I leave the final answer as it is. So in the first part again you are asked calculate the potential difference delta V slash change in electric potential जो भी wording सही लगे and a similar question from Q to P. ठीक है, तो पहले मैं VP calculate कर रहा हूँ. आप numbers को please stop से देख लो. So the working shown with the red marker वो जरा देख लेना. So one of the charges plus 12 microcoulombs. Its distance from the point P is 4 centimeters. 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 4 centimeters
ये आपकी पहली वर्किंग हो गई. The other charge is minus 8 microcoulombs. Its distance is 8 centimeters. ये आपकी सेकेंड वर्किंग हो गई. एड अप कर दिया तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया. The answer with the underline is the electric potential at the point P. अब exactly same working Q वाले के लिए भी करनी है. तो अब जो पर्पल कलर है ना उसको जरा फॉलो कर लीजिएगा. So again a charge of 12 microcoulombs. Its distance from Q is 8 centimeters. And the other charge of minus 8 microcoulombs, whose distance from Q is 4 centimeters. ये आपके पास सेकेंड वाली वर्किंग हो गई. इसका भी ये रिजल्ट आ गया. और बिल्कुल सेम वर्किंग करिए द वन दैट वी डिड इन द लास्ट एग्जांपल. और फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. सो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है. अगर आपको आंसर्स के नंबर्स से चेक करके कंफर्म करना हो सो प्लीज डू दैट. मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया है. दिस वर्क्स आउट टू बी द फाइनल आंसर. एक सेकेंड आपकी स्क्रीन पे आ जाए. परफेक्ट. So the final answer, which is the difference between the two above answers, जो mustard वाले कलर के आंसर्स थे ना, उससे वर्कआउट कर लीजिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये आंसर आ जाएगा. अब मैं आगे थ्योरी को एक्सटेंड कर रहा हूँ. So in the next part, they are now asking you calculate the amount of work done in moving a proton between P and Q. या ऐसे लिख लेता हूँ, in moving a proton. And I'm copying down the statement from the top from Q to P. If the question is asking you how much work is done in order to move a proton from the point Q to the point P. Working देख लेना. Now, from AS, you would remember potential difference was defined as work done per unit charge. अच्छा, O levels में भी किया हुआ था और AS में भी किया हुआ था. So work potential difference is defined as work done per unit charge. So from this result, you can say work done is equal to Q times P. Apply कर लेते हैं. The charge that is given to you in the question is a proton. Just remember to write down the sign. So this is your proton. And the answer for the potential difference that we calculated a while back, the one shown with the pink highlighted tick, that is 2.25 times 10 to the power of 6. So for anyone who is wondering कि potential difference क्यों calculate करवाते हैं exams में, so basically वो जब भी potential difference calculate करवाते हैं उनका अगला motive यही होता है कि वो potential difference calculate कराने के बाद आपसे work done calculate करवाना चाह रहे होते हैं. So as long as you remember the formula जो AF वाला था, potential difference is equal to work done upon charge, और W is equal to QV, जो भी acceptable form आपको सही लगे. So charge in this case is a proton. I've written down the value with the plus sign. So remember to take the charge into account. And potential difference is the answer from the previous part. आप calculate करोगे तो you will end up getting this answer. And again, the positive answer is implying
कि अगर आप प्रोटॉन को मूव कराना चाहते हो फ्रॉम द पॉइंट Q to P, then the work needs to be done against the field, which amounts to so and so joules. So basically, to move a proton, simple terms mein, to move a proton from Q to P, the amount of work that needs to be done against the field amounts to 3.6 times 10 to the power of minus 13. ठीक है, now I'm sure you would all appreciate कि अगर मैं इस क्वेश्चन में एक मामूली सा चेंज ये कर देता, बिल्कुल आई थिंक हो सकता है आपको लगे बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट चेंज है कि अगर मैं प्रोटॉन की टर्म को बस चेंज करके इसकी जगह उठा के इलेक्ट्रॉन लिख देता, है ना, आप नोट कीजिएगा आंसर सेम रहता है, बट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के आ जाने से आपकी साइंस पे फर्क पड़ जाता। सो प्लस वाला साइंस जो है ना वो चेंज करके फिर माइनस में आ जाता। आई एम श्योर कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे उसको, और फिर माइनस की वजह से आंसर तो सेम रहता, आंसर की सिग्निफिकेंस चेंज कर जाती, और माइनस आंसर का मतलब बनता कि now work is no longer going to be done against the field, but rather a negative answer would have implied that work is now going to be done by the field itself if an electron were to move from Q to P. ठीक है, तो बस sign of the charge should be taken into account, that is important, ताकि उससे आपको पता चल सके कि whether work is done by the field or work is done against the field. Anyways, ये pink highlighted terms को erase कर रहा हूँ, next wording पे move करते हैं, इसी की further extension. So the next statement, मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में इसको एड्रेस करना है. Is it possible for the answer of potential difference to ever be equal to 0? Is there a scenario? If yes, तो बना के देखते हैं, where the answer for potential difference delta V or change in electric potential, whatever seems appropriate to you, works out to be 0. ठीक है, and if yes, then what will that signify? So the first thing first, can we ever end up getting an answer of delta V potential difference as 0 or change in electric potential as 0? If yes, तो कौन से circumstance में होगा, and what will that signify? So, have a look at the diagram which I've constructed. अच्छा, रोहिल ने लिखा है both are same. So what I'm implying, what I'm probably understanding from his statement is he's suggesting कि अगर P के potential का आंसर X आता है और Q के potential का भी आंसर coincidentally X आता है, ठीक है, so this is what he's trying to imply कि if 2 points का potential equal आ जाए, if VP is equal to VQ, then surely the potential difference between them will be 0. अच्छा, इब्राहिम ने लिखा है when P and Q are the same. अच्छा, सिर्फ चार्ज का सेम होना जरूरी नहीं है, और लेट्स सी मैं बना के दिखाता हूँ. सो ऐसा कब होगा ना, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं, एक सेकेंड. तो लेट मी डायरेक्टली जंप ऑन टू द डायग्राम, तो वो रोहिल वाला स्टेटमेंट कंफर्म भी हो जाएगा, और जो इब्राहिम ने लिखा हुआ था आई थिंक उसके स्टेटमेंट की माइनर एडजस्टमेंट के साथ उसका भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा. नल पॉइंट पे रिमेंबर नवाल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होती थी, ठीक है, नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाज 0, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अग्रीड? ओके, सो ये भी इरेज कर दो. लेट्स सी, डायग्राम चेक करते हैं. मैं लैंडस्केप में चला जाऊंगा ताकि आप पूरा आंसर ना रीड करो. ओके आयशा, अगर तुम्हें हिम्मत पकड़नी है बेटा तो एक आध कैलकुलेशन कर लो. द नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. तो अगर मैंने इसके आंसर्स नहीं निकाले थे ये सोच के कि शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, और आई थिंक शायद ना ही पड़े. हैव अ लुक एट दिस डायग्राम. जो इब्राहिम ने बोला था ना वो भी सही है कि चार्जेस को मैंने देखिएगा मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल रखा है, और टाइप ऑफ चार्ज भी सेम है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है.
और डिस्टेंसेस देखिएगा, P का डिस्टेंस फ्रॉम वन साइड इज 5 एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द अदर साइड इज 10, और Q के लिए भी चेक कीजिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम वन साइड इज 5 एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द अदर साइड इज 10। से मैंने कोशिश करी है कि चार्जेस के न्यूमेरिकल नंबर्स भी सेम रखूं और डिस्टेंसेस को भी बिल्कुल सिमेट्रिकल रखूं, 5 फ्रॉम वन साइड, 10 फ्रॉम द अदर साइड फॉर P एंड लाइकवाइज फॉर Q। तो सिचुएशन इतनी सिमेट्रिकल है कि अगर आप इस वाले डायग्राम के ऊपर अपनी थ्योरी अप्लाई करो तो आई गेस विदाउट मी डूइंग मच आप अग्री करोगे कि आपके पास आंसर 0 आना चाहिए। डायग्राम की वर्किंग आप खुद देख लो। आई हैव डन द कैलकुलेशन फॉर पोटेंशियल एट P। ओके, थैंक यू आयशा। So she has worked out the answer for me. Potential at P is amounting to 2.16. Thank you, Ash. Times 10 to the power of 6. कुछ लोग volts लिखते हैं, which is perfectly all right because potential is volts. और कुछ लोग joules per coulomb लिखते हैं, वो भी equally correct है, जैसे आपको सूट करे। और आई थिंक अगर आप रेड वाली वर्किंग को फॉलो कर चुके हो तो फिर जो पर्पल वाली वर्किंग है, आई थिंक पर्पल ही कलर है, उसकी भी वर्किंग को देख लीजिएगा। So from the diagram, the red working goes with the red arrows, the purple working goes with the purple arrows. Which color is this, by the way, Ash? I think it's purple. And she's saying, Aisha is saying, कि same is the answer for Q as well. So, रायन उसको अलग से आगे चल के डिस्कस करेंगे तुम्हारे क्वेश्चन को, तो आई थिंक वो इस पे तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा आगे चल के वर्किंग आएगा। दैट कम्स अंडर अ सेपरेट हेडिंग। सही, ओके। तो यार क्यू वाले का भी आंसर हर सजेशन इंप्लाइज कि वो सेम आ रहा है, दैट इज दिस। सो मैंने डिस्टेंसेस और चार्जेस इस तरह से अकोमोडेट करके दिए थे कि आपकी अरेंजमेंट बिल्कुल सिमेट्रिकल बन रही थी। सो वी वर एक्सपेक्टिंग द टू आंसर्स टू बी आइडेंटिकल एज वेल। हाँ, कोलेशन ऑफ पार्टिकल अलग से करेंगे बिल्कुल। तो यार इसका एक तो डेफिनेट आंसर हो गया कि यस इट इज पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी जीरो, है ना। अब फर्दर जरा स्टेटमेंट देखिएगा, तो मैंने स्टेटमेंट के अंदर रीजनिंग लिखी हुई है, तो ये प्लीज जरा पूरी रीजनिंग आप लोग रीड कर लो। ठीक है, तो मैंने रीजनिंग के अंदर वो एक्सप्लेनेशन लिख रही है कि व्हेन विल दिस बी पॉसिबल। सो इफ द पोटेंशियल एट P Vp is equal to the potential at Q Vq, that is the potential difference delta V is 0. Such points in electrostatics are called equipotential points. ठीक है, और सिग्निफाई क्या करेगा वो मैंने आगे लिखा हुआ है। So it signifies that no work is done in moving a unit charge between these 2 points. ठीक है, so if potential at one point is equal to the potential at the other point, as Ruhail pointed out earlier, then definitely the potential difference between the 2 points will be 0. Such points in electrostatics are given a special name, and such points are called equipotential points. एक बात तो ये हो गई, और इन पॉइंट्स की सिग्निफिकेंस क्या होती है वो मैंने आगे लिखी है। So it signifies that neither work is done by the field nor work is done against the field. So in literal sense, no work is done in moving a unit charge between these 2 points. सही। अब मुझे इसका एग्जाम्पल देना है कि इसको हम प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस में कहां पर यूज करेंगे। सो मैं इसको लैंडस्केप से दोबारा शिफ्ट बैक करता हूं। सो दिस आइडिया ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, इसको कहां पे यूज करेंगे इसको देख लीजिए।
ठीक है, जरा सा मेरे साथ साथ की वर्डिंग्स केयरफुली देखो। अच्छा, in the heading first of all it says sketch a graph of electric potential V against R for a hollow charged sphere. For those of you जिनकी मेमोरी उनको रिकॉल करवा दे, तो काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमने इससे सिमिलर ग्राफ लास्ट क्लास में बनाया था। ठीक है, एंड फॉर दोज ऑफ यू जिनको लग रहा है ना कि हमने ये वाला ग्राफ तो लास्ट क्लास में बनाया था, हम इसको दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं वो लास्ट क्लास वाला ग्राफ आपको दिखा दूं ताकि आपको फर्क नजर आ जाए। तो बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनाया था लेकिन सेम नहीं था। तो जरा देखिएगा क्या फर्क था। सो एक सेकेंड, लेट इट अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। चेक कर लीजिएगा, काफी हद तक मिलता जुलता ग्राफ है, बट वर्डिंग पढ़ ले तो आपको फर्क नजर आ जाएगा। सिमिलैरिटी ये है कि दिस वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड फॉर अ hollow charged sphere and the one that we are about to construct is also for a hollow charged sphere। और वो रोहिल ने सही लिखा हुआ है कि जो ग्राफ हमने प्रीवियसली बनाया था, दिस वाज द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस द डिस्टेंस आर, है ना, जिसका ये फॉर्मूला था। So the formula was Q upon 4 pi E naught R square. And the graph that we had constructed for a hollow charge sphere, that was for electric field strength. Now going back, the heading appears to be roughly the same, but I think फर्क आपको नजर आ जाएगा. So let it appear in front of you before I start. Okay, so now the graph is for electric potential. Now, I can't stress enough. देखने में आपको नाम एक जैसे लगेंगे, लेकिन please distinction रखिएगा. So now we are plotting a graph of electric potential versus the distance r. ठीक है, so it is still for a hollow charge sphere, but this time the graph is for V against R. So how would the shape look like? उसकी एक recognition कर लेते हैं. Let's break down the graph into two components. So I think as far as the green portion is concerned, so I think based on the formula, you can recognize कि ये वाला shape ऐसे क्यों बना हुआ है. So V is inversely proportional to R. So I guess that kind of makes sense कि जब आप R की वैल्यू को डबल करोगे तो V की वैल्यू आपकी हाफ हो जाएगी. So the shape of the graph kind of makes sense कि inverse proportional वाला graph बनेगा. But do recognize कि electric field strength में ये होता था, electric field strength में ये होता था, mind you, कि based on the formula में R square आता था, जिसकी वजह से जब हम R की वैल्यू को हाफ करते थे, so electric field strength आपकी 1/4 हो जाती थी. तो अगर आपको ग्राफ को कंपेयर करना हो ना, so वो जो लिखा हुआ है इब्राहिम ने कि the difference is basically R square का, that is right, और 1/4 की वर्डिंग भी सही है. So डायग्राम के हिसाब से आपको हो सकता है लगे कि ग्राफ वैसा ही बना हुआ है, लेकिन फर्क तो है ना. और आई थिंक मैंने उस फर्क को हाईलाइट नीचे कर दिया है. दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी लेस स्टीप देन द ग्राफ ऑफ ई. अगर आपको ड्रॉ करना है तो मैं बना के दिखा देता हूँ. तो अगर आप ई वाला ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसे बनेगा. मैं तो खैर इरेज कर दूंगा, इसीलिए मैंने हाईलाइटर से बना दिया. ये बनेगा, है ना. सो पोटेंशियल वाला ग्राफ जो है ना, द ग्रीन वन, इनवर्स तो दोनों है, लेकिन ग्रीन वाले का ड्रॉप थोड़ा सा स्लोली होगा, सो लेस स्टीप. और जो पिंक वाला है, द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इफ कंस्ट्रक्टेड, तो उसका ड्रॉप आपके पास ज्यादा रैपिड होगा. सो हेंस फॉर द ग्रीन वन
I've written the term less steep than the electric field strength. Okay, ये तो मैं erase कर दूं. अच्छा, अब जो अंदर वाला पोर्शन ग्राफ का बना हुआ है ना, उसको हमने कैसे बनाया है? पहले लेट मी गो बैक. तो अंदर वाले पोर्शन की जस्टिफिकेशन हमने क्या दी थी, वो देख लें. ठीक है, इसकी जस्टिफिकेशन हमने ये दी थी. Since the sphere is hollow, there is no charge on the inside. So if there is no charge, there can't be any field. Hence the electric field strength is 0. ठीक है, ये जस्टिफिकेशन दी थी. तो अब जो नया ग्राफ हमने बनाया है, इसकी जस्टिफिकेशन एग्जाम्स में कभी 1 मार्क की पूछते हैं, कभी 2 मार्क्स की पूछते हैं और कभी 3 मार्क्स की पूछते हैं कि यार ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इसकी एक्सप्लेनेशन ऑन एंड ऑफ काफी दफा पूछते हैं. Sometimes they ask you to construct the graph. Sometimes they don't ask you to construct the graph. Rather, they ask you for the explanation. यार, if the explanation is for less than 3 points, less than 3 marks, I'm sorry, तो फिर तीनों points मत लिखना. और मैंने ये एक ही दफा में ऐसे लिख लिया है कि 3 marks की acceptable explanation पूरी आ जाए. फिर इसको reduce कर देना if the question doesn't require these many details. तो wordings देख लो. First point, hollow sphere है, the charge on the inside is going to be 0. ठीक है. Second point, no charge, no field. These wordings are pretty much similar to the wordings जो पहले भी लिखी हुई है. Third wording में थोड़ा सा difference आ जाएगा. So first point is roughly the same. Hollow, charge on the inside of the sphere is 0. Second point is also roughly the same. No charge, so no field. Third point पे थोड़ा सा elaboration किया है. No field, therefore no work done by the field. And if work done is 0, then all points inside the sphere can be classified to be at equipotential, therefore a horizontal line. So for 3 marks, तीनों points को collaboration में लिख देना. कम marks का हो तो फिर सिर्फ last वाला point लिख देना. ठीक है. So पहली चीज, it's a hollow sphere, so the charge on the inside is 0. Second point, if there isn't any charge, then there can't be any field. Third point, without any field, there is not going to be any work done by the field. And if the work done is 0, then all points inside the sphere can be classified to be at equipotential. Equipotential का मतलब था same potential. Therefore, the graph needs to be a horizontal line. सही है. So for 3 marks पूरी wording को elaborate कर देना. काफी common question आता है. और अगर 1 mark का हो तो सिर्फ last वाला point indicate कर देना. So this is how the shape of the graph looks like, and the reasoning is stated alongside the shape of the graph. ठीक है. जो 5 minutes का break दो. मैं headphones कान पे रख रख के थक गया हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन हो रही है. सो मैं इसलिए ये हेडफोन्स का माइक यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कंस्ट्रक्शन की आवाज ना आए. ऑलराइट, 5 मिनट में आता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ. अच्छा, जब तक मैं आगे कंटिन्यू करूँ ना, सो थोड़ा सा काम दे के जा रहा हूँ तुम लोगों को ना. तो मुझे जो नेक्स्ट वाली वर्किंग करनी है, बिफोर आई स्टार्ट विद दैट वर्क, तुम लोगों को एक काम दे दूँ. तो प्रीवियस क्लास में हमने ये ग्राफ्स भी बनाए थे. लेट मी शो देम टू यू. ऑलराइट गाइस, सो प्रीवियस क्लास में आई थिंक ये ग्राफ्स बनाए थे. आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे ना. तो जरा एक नजर इन ग्राफ्स को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे इनसे सिमिलर ग्राफ्स बनाने हैं ना. आई जस्ट लीव इट इन अ मैनर कि बस आप 2 ग्राफ ये वाले देख लो.
ठीक है, आई एम होपिंग कि शायद आपको याद होगा कि ये ग्राफ्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हुए थे। दीज ग्राफ्स वर आल्सो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। पहला वाला था लाइक चार्जेस के लिए, सेकंड वाला था अनलाइक चार्जेस के लिए। तो जरा एक नजर बस इसको देखते रहना। ऑलराइट यार, सो ठीक है, these were the graphs of electric field strength for like charge and then for unlike charge. So just the reason I just wanted you to just quickly have a look at it is because कि अब similar काम करना है. So let me shift back. So if you now, okay. So if you now pay attention towards the next heading, I'll erase the graph और मैं इसको दोबारा से reconstruct कर दूंगा. बस पहले सिर्फ heading देख लेना. एक सेकेंड ना. So let the screen settle down. ठीक है. ठीक है. So now we are looking at the graph for again graph for electric potential against the distance. So now once again V against R, and for like charges, then for unlike charges. तो काफी similar graphs हैं. So the only reason I wanted you to pay attention towards the previous graph was ताकि आप एक fair analysis कर सको, because देखने में बहुत हद तक similar है. Okay. तो first वाले scenario के अंदर for like charges, I've assumed one charge to be alpha. तो पहले alpha के context में बात कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, पोटेंशियल का ग्राफ जनरली बनाना इसलिए आसान है बिकॉज इफ यू लुक एट द फॉर्मूला तो आपको शेप का तो आइडिया हो जाता है. यू कांट रियली गो रॉन्ग विद द शेप बिकॉज यू नो कि इनवर्स प्रोपोर्शन होगा बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप. एंड द फैक्ट दैट पोटेंशियल के अंदर साइन वाज कंसिडर्ड, तो स्टूडेंट्स को लर्न करना जनरली आसान होता है पोटेंशियल का ग्राफ, बिकॉज इफ साइन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन देन दैट मींस कि अल्फा व्हिच इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो इफ आई राइट अ प्लस साइन, ऑटोमेटिकली आपको जजमेंट हो जाती है कि द आंसर ऑफ पोटेंशियल विल टर्न आउट टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू because of the plus sign in the formula due to alpha particle which is positively charged. और positive potential का मतलब है कि the graph should be above the x-axis. So I've seen many students कि वो potential के graph को learn नहीं करते, वो बस इस तरह से याद कर लेते हैं, and that seems to be a fair choice. कि वो learn करते हैं since potential के अंदर sign of the source charge is taken into consideration. So they come up with this own sequence of their own कि वो कहते हैं if the source charge is positive, then potential will be positive, and positive potential implies that for a positive charge, the graph must be constructed in the first quadrant. And I guess it's a pretty easy way of remembering as well. First quadrant का मतलब है above the x-axis. And if in case a charge was negative, if in case the source charge was negative, then the electric potential's answer would have also been negative. और negative answer का मतलब होता कि instead of constructing the graph above the x-axis, we would have then constructed the graph below the x-axis. तो मैंने रीजनिंग देखिएगा किस वर्डिंग्स के साथ लिखी हुई है. तो पहले मैं ग्राफ बना दूं. So inverse वाला ग्राफ बनेगा. So I'll start with the alpha particle first. ठीक है. So since alpha is positively charged, potential will be positive. So the graph should be above the x-axis. Draw करता हूँ, देख लीजिएगा. Red goes with red. So standard inverse वाला ग्राफ. Just make sure कि इसकी steepness थोड़ी सी कम होगी. It will be less steep as compared to the graph जो हम लोगों ने previously electric field strength के लिए बनाया था. The shape is essentially the same, but सिर्फ the fact that it will be less steep. So alpha is positive. So the potential is also going to be a positive value.
To signify a positive value, the graph should be above the x-axis. ये आपका रेड वाला ग्राफ बन गया. Proton is also positive. So the potential will be positive for the proton as well. So proton का graph also above the x-axis. So the purple one is for the potential of proton. The red one is for the potential of alpha. और अब मस्टर्ड वाले कलर से रिजल्टेंट बना देता हूं. आपको याद भी होगा रिजल्टेंट कैसे बनेगा. सो काइंड ऑफ लाइक दिस. यू माइट टर्न अराउंड एंड से कि सर एग्जैक्टली सेम ग्राफ बना है ना, बट एक डिफरेंस है. और वो डिफरेंस ये है, ये जो ग्राफ बना था ना, जिसको आप सेम ग्राफ समझ रहे हैं, ये वाकई में देखने में सेम बना है. बट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दिस वाज द ग्राफ दैट वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर अनलाइक चार्जेस. रोहिल, तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा. सो ये आपके पास अनलाइक चार्जेस के लिए बना हुआ था पहले, सही. और अब यही वाला ग्राफ वापस बना है. बट नोट कीजिएगा, ये वाला ग्राफ जो आपके पास कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये ग्राफ आपके पास बना है बट फॉर लाइक चार्जेस, सही. और अगर किसी को इस टर्निंग पॉइंट की रेलेवेंस जाननी हो, जो मेरा ख्याल है शायद रोहेल वर्डिंग यूज करना चाह रहा था. सो बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस, यू नो देयर इज अ नल पॉइंट. सो दिस टर्निंग पॉइंट ओवर हियर, व्हिच इज द मिनिमम टर्निंग पॉइंट, ये आपके डायग्राम के अंदर नल पॉइंट को सिग्निफाई करता है. सो बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस जो नल पॉइंट अराइज होता है, वो नल पॉइंट आपके मस्टर्ड वाले ग्राफ के टर्निंग पॉइंट के साथ कोरिलेट करता है, सही. सो ग्राफ बिल्कुल सेम बना हुआ है ना, बट फ्लिप हो गया है. फ्लिप इन द सेंस कि a similar graph was constructed in electric field strength, but that was for unlike charges, whereas this graph is for like charges. और इसकी रीजन जो मैंने साइड पे लिखी हुई है ना, उसको लर्न करना बहुत आसान है. सो आई थिंक रीजन को लर्न भी ऐसे कीजिएगा. बोथ पोटेंशियल्स आर पॉजिटिव, है ना, बिकॉज दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे. बोथ पोटेंशियल्स आर पॉजिटिव, therefore both graphs have the same signs. Okay, so alpha is also positive, proton is also positive. So both potentials are positive, so the graphs have the same signs. And moving on, अगर आप दूसरे वाले केस को देखते हैं, इसका सजेशन मेरा ख्याल है आप खुद दे सकते हैं कि how would the shapes now look like. Alpha के लिए तो it will stay the same. I'm kind of copying down the same graph from the top. Exactly the same graph है जो पहले बना हुआ था. इलेक्ट्रॉन के लिए since electron is negative ना, so आपका potential भी negative हो जाएगा. And the negative potential will imply that now the graph is going to go below the x-axis. इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राफ आपका नीचे बनेगा. सो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का बन गया. पहले रीजनिंग देख लें बिफोर आई मूव ऑन टू द रिजल्टेंट वाला ग्राफ. सो रीजनिंग मैंने वर्डिंग इसी तरह लिखी है कि आपके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए. सो द स्टेटमेंट ओवर हियर इज one potential is positive for alpha while the other potential is negative for electron. Therefore the graphs have opposite signs, so one is above and one is below. And अब इसका रिजल्टेंट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं.
So once again, the mustard colored graph for the resultant. मैं ड्रॉ करता हूँ. पहले बीच में एक पॉइंट को मार्क कर दूं. ये 0 वाला पॉइंट मैंने एक मार्क किया हुआ है with the blue marker, where the positive value and the negative value will kind of balance out each other. तो जो मस्टर्ड वाला ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा. And if somebody is interested in naming this term कि यार ये ब्लू वाला जो डॉट सर ने बनाया है, इसका कोई नाम अगर आपको रखना हो तो this is the point where the potential is zero. वैसे कोई नाम यूजुअली तो स्टूडेंट्स नहीं रखते, लेकिन अगर आपको रखना हो तो नल पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, दोनों टर्म्स आपके पास एक्सेप्टेबल है. इक्वी पोटेंशियल मत बोलिएगा, because equipotential is a term that is used on a comparative scale. Because equipotential का मतलब होता है you are comparing potentials of two different points. So equipotential के लिए जरूरी है कि दो पॉइंट्स होने चाहिए, और अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम आ जाए तो then we can use the term equipotential. यहाँ पे the blue dot is just one point, not a combination of two points. तो फिर इसके लिए equipotential के बजाय जीरो पोटेंशियल का टर्म या नल पोटेंशियल का टर्म या सिंबल्स की फॉर्म में कहना हो तो द रिजल्टेंट पोटेंशियल इज जीरो. ठीक है. सो इक्वी पोटेंशियल का टर्म जनरली यूज किया जाता है व्हेन यू आर कंपेयरिंग द पोटेंशियल ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट्स. तो सिंगल पॉइंट के लिए द टर्म इज जस्ट नल पोटेंशियल और द टर्म इज जस्ट जीरो पोटेंशियल. और सिंबल्स की फॉर्म में लिखना हो सो वी आर इज इक्वल टू जीरो. सो लेट मी लेबल द मस्टर्ड कलर्ड ग्राफ एज वेल. तो ग्राफ्स एज आई सेड, आई एम अगेन रिपीटिंग, बिल्कुल सेम बने हैं. बस ये फर्क है कि ग्राफ्स फ्लिप हो गए. तो जो ग्राफ प्रीवियस केस में लाइक चार्जेस के लिए था, वैसा ही ग्राफ यहाँ पर अनलाइक चार्जेस के लिए बना है ना. एंड जो प्रीवियस वाले में अनलाइक का बना था, वैसा वाला यहाँ पर लाइक चार्जेस के लिए बना है. मोहित ने लिखा हुआ है, does the magnitude of the charge will affect the graph? Yes, it will, मोहित. कैन यू नोटिस मैंने फर्स्ट ग्राफ में अल्फा का ग्राफ को हायर अप स्टार्ट किया है. लेट मी शो दैट. अल्फा को मैंने ज्यादा हायर अप दी ऑर्डर स्टार्ट किया, और जब तुम प्रोटॉन को देखोगे मोहित तो मैंने उसको जरा से लोअर डाउन स्टार्ट किया है. अनलाइकवाइज सेकंड डायग्राम में भी देखो, अल्फा वाला रेड ग्राफ वाज स्टार्टिंग वे अप, काफी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बहुत दूर से स्टार्ट किया था. और अगर तुम इलेक्ट्रॉन वाला ग्राफ देखोगे ना, आई थिंक यू शुड बी एबल टू कंपेयर एंड मेक अ रेलेवेंट कंपैरिजन कि यस फर्क है. So the magnitude of the charge does affect the shape of the graph. So it will affect the gradient of the graph. See, so quadrants will represent only directions, right? Yes, Ryan, you're right. See, so if it's a positive potential, first quadrant. If it's a negative potential, fourth quadrant, so as to say. Or you can remember it, positive potential hai, so the graph should be above the x-axis. Negative potential hai, so the graph should be below the x-axis. See? Now, how can we use this idea of zero potential? तो एक सेकेंड है, ये मैंने पिंक लाइंस जो बनाई थी ना, ये जरा मिटा दूं. ग्राफ ना मिट जाए. परफेक्ट. तो यार ये नल पोटेंशियल को कहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, उसका एक एग्जांपल आपको दे दूं. तो बिल्कुल जो लास्ट एग्जांपल में ग्राफ बना हुआ था ना, मैंने उसी का एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है. तो फ्रॉम द वर्डिंग, एग्जांपल ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ नल पोटेंशियल है ना, वेयर द वैल्यू ऑफ v वाज कमिंग आउट टू बी जीरो, कैन एक्चुअली बी यूज्ड. हैव अ लुक एट द डायग्राम. मैं इरेज करता जा रहा हूँ, तो आप पहले सिर्फ क्वेश्चन की वर्डिंग्स को देख लो. So there is one charge of 20 microcoulombs. This is given to you.
The other charge is unknown. Uski value is not provided to you. They are separated by a total distance of 60. Okay, and the graph is given to you for voltage against distance. So charge given at 20 microcoulombs on one side and a charge of Q on the other side. Q is the unknown charge. The total distance between them is given to you as 60. The graph is also provided to you. So the diagram and the graph are both provided. Okay, so diagram and graph both are provided. The question is saying um, you are supposed to find the value of unknown charge Q. ठीक है, तो Q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. अब वर्डिंग्स देखिएगा. For the point X, I'll mark the point X on the diagram. This point X, from the graph, you would agree. If you want, you can call this point X as zero potential. Or you can refer to this point by the term null potential. So for the point X, we can conclude that V is equal to 0. This point is 48 centimeters from one charge and 60 minus 48, 12 centimeters from the other charge. ठीक है, डायग्राम पे शो कर रहा हूँ. This point is 48 centimeters from one charge. डायग्राम पे नीचे given है. And 60 minus 48, so 12 centimeters from the other charge. Sorry यार, एक सेकेंड ना. Hence, using the formula Q upon 4 pi E naught R, we can find Q as shown below. जरा वर्किंग देख लीजिएगा. आप नंबर्स को प्लीज देखते जाइए. मैं एरोस बना के आपको सजेस्ट कर दूं कौन सा वाला नंबर किस चीज की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है. फिर यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ. ठीक है, सो द फर्स्ट चार्ज एंड द फर्स्ट डिस्टेंस. ठीक है, दिस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन. सो ये आपके पास एक्स के पोटेंशियल का आंसर वर्कआउट करके आ गया. ये मैंने पहले वाले पॉइंट की वर्किंग करी है. इफ यू वांट आई कैन राइट इट डाउन एज Vx एज वेल इफ यू वांट. ठीक है, ये आपका पहला रिजल्ट आ गया. सेकंड वाले के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं. सो द सेकंड चार्ज एंड द डिस्टेंस. Charge is unknown, so Q. Distance is 12. ये भी जरा देख लीजिएगा, मैंने नंबर्स को लगा दिया है. And we know that since the point X is null potential or zero potential, so I've equated my answer to 0. ठीक है, so मैंने potential at X calculate किया due to the first charge, the pink one. Then I calculated the potential at the same point X due to the second charge, the green one, so as to say. Numbers को check कर लीजिएगा, distances को और charges को. And since I know at point X the potential is 0 from the graph, that is, so I've equated my answer to be equal to 0. Solve मैंने नीचे किया हुआ है. I guess वो आप follow करेंगे तो आपके पास वर्किंग का रिजल्ट आ जाएगा. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? All right, thank you. So as I was saying,
वर्किंग को जरा प्लीज देख लेना. इफ यू वांट ना, आप इसको बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, बट आई एम श्योर यू वुड एग्री कि द टर्म्स 4 pi e naught, there is no real point in writing down these terms, hence मैंने इनको इग्नोर कर दिया है because they'll eventually get cancelled out. तो कैलकुलेशंस आप लोग फॉलो कर लें. मैंने डायग्राम पे मार्क भी कर दिया है पॉइंट की रेलेवेंस को. सही. सो पोटेंशियल एट x मैंने कैलकुलेट किया ड्यू टू वन चार्ज एट अ टाइम. So the first working and then the second working. And since the point labeled as x on my diagram was a point of zero potential, so I've added up the individual potentials and equated the answer to zero. Sort out आप कर लीजिएगा. चार्ज का रिजल्ट आपका वर्कआउट करके आ जाएगा. तो आई गेस इस वाले पॉइंट पे आज वाली क्लास को फिर कंक्लूड कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास से इसकी कंटिन्यूएशन आगे करा. ठीक है यार. आई एम डन फॉर टुडे. यहाँ पे आज स्टॉप कर रहा हूँ. ऑलराइट गाइस. सही है. सो टेक केयर गाइस. बाय बेटा. खुदा हाफिज़ यार.